Number 2 of exercise 8.3 is convert each part of the ratio to percentage. The first part is 3:1. So we start with the first part, 3:1. So here total parts equals to, we have to add these two ratios, 3 plus 1, that is 4. इसमें कितने टोटल पार्ट्स कितने थे, 4, और उनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3:1. okay, so therefore the first part equals to, first ratio is 3 out of 4, so in fraction we write it as 3/4. Now for percentage, to change this ratio to percentage, we multiply this by 100%. okay, so 100%, that means 3/4, 100% means 100/100, तो ये कैंसिल आउट होंगे, वापस आपको 3/4 मिला है. ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं इसे, 3/4 इंटू 100%. सो नाउ हम कट आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 4 कैंसिल होगा, करेगा 100 को हाउ मेनी टाइम्स, 25 टाइम्स, एंड 25 3s are 75, so it is 75%. okay, now second part. For second part there are two methods. You can subtract 75 from 100, because जो परसेंटेज होती है टोटल हम 100 में से लेते हैं. सो व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 75 फ्रॉम 100 वी गेट 25. तो सो द सेकेंड पार्ट इज 25%. ओके, बट हम रेशियो से कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट इज 1 out of 4, so it is in fraction is 1/4. Now 1/4 for percentage we multiply it by 100%. okay, so 4 cancel out 25 times, so it is 25%. okay, similarly we solve the second part of this question, 2:3:5. so here total parts are 2 plus 3 plus 5, that is 2 plus 3 5, 5 plus 5 10. so total parts are 10, and हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 10 को 2:3:5 में. so the first part is 2 out of 10. so in fraction the first ratio is 2/10. for converting it into percentage we multiply it by 100%. so 2/10 into 100% equals to 0 0 cancel out, we get 20. so the first part is 20%. now the second part in ratio is 3, so 3/10. for percentage we multiply it by 100%. so 0 से 0 cancel out, we get 30%. 3 into 10, that is 30%. now the third part equals to 5/10, that is 5/10 into 100% for changing this ratio to into percent. 0 0 cancel out, 5 10 ja 50, so it is 50%. now the C part, 1:4, that is total parts are 1 plus 4, that is 5 पार्ट्स में, और उसमें से हमने कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4:1 में. ठीक है, सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 1/5. 1 रेशियो था फर्स्ट का, और टोटल कितने में से था, आउट ऑफ विच 5, सो 1/5. so for changing this into percent we multiplied by 100%, so 1/5 into 100%. so 5 20 times cancel करेगा 100 को, so we get 20%. now second part, for second part you can subtract 20 from 100 and we get 80%. okay, so now ऐसे भी solve कर सकते हैं. दूसरी मेथड 4/5 and 4/5 into 100%, so 5 cancel out, 20 times 100 cancel out by 5 by 20 times, and 4 2 ja 8,
So it is 80%. Similarly, the last part of this question, 1:2:5. So the total parts are 1 plus 2 plus 5, that is 8. 5 plus 2 7, 7 plus 1 8. So the first part is 1/8. For percent we multiply it by 100%. So it is ये पूरी टाइम्स कैंसिल नहीं होगा. 8 1 जा 8, 9 10 2 रिमाइंडर, it is now 20. 8 2 जा 16, 4 remainder, and it is 5. So 12.5%. Now second part, 2. Second part ratio is 2. So 2/8 into 100. Okay, 100%. So now 2 4 जा 8 and 4 से ये कैंसिल होगा 25 times. So second part is 25%. Now the third part के लिए आप इन दोनों को ऐड करके 100 में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, और या 5/8 into 100%. Okay, so it is 2 से कैंसिल आउट, या 4 से 4 2 जा 8 and 25 टाइम्स ये होगा. सो 25 5 जा 125/2. नाउ इसे सब डिवाइड करेंगे 6. 2 6 जा 12, 2 2 जा 4. सो 62.5%.